हेलो। स्वागत है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास and today our topic is the atoms and molecules. So this is very important topic. So both for your board exam और उसके साथ साथ जो competitive exam है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही important है। ओके। सो अभी हम डिस्कस करेंगे जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल क्या है। Actually, if we see the atoms and molecules, so basically the especially the atom, so they are very small in size. So the size of atom in the range of nanometer. So basically if you think about, so it is for hydrogen atom, which is the smallest element or the smallest atom. So this radius is around 0 0.1 nanometer. And nanometer that we can understand, or nanometer, this is nanometer that we understand like this. 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. Okay, so you can imagine how small it is. Okay, तो क्या है, जो एटम बहुत ही स्मॉल है, तो हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, even point millimeter, point 0.00 maybe, the micrometer up to, so basically the visible what we can measure in our naked eye, so that will be micrometer, that is 10 to the power minus 6 meter. तो ये हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन नैनोमीटर ये ऐसे हम मेजर कर नहीं सकते। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप चाहिए वो देखने के लिए। सो हम इसमें क्या बोलना चाहते हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली, सो दे आर नॉट विजिबल इन नेकेड आई। तो क्या है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल नो ये दिखाई नहीं देते। तो हम कैसे समझेंगे जो एटम और मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, तो ऐसे है, हम कोई भी मेटल लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं। सो इफ यू टेक एनी मैटर, सो सपोज इफ यू टेक ए चॉक, okay, so or any iron bar, okay, so iron bar. So if you take any of these things and if you know, if you divide, so ऐसे हम एक चौक को ऐसे ही तोड़ 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 के ऐसे, जो फाइनली व्हाट एवर द स्मॉल पीस, और सबसे छोटा जो पीस मिलेगा, तो वो हम बताएंगे, उसको बोलते हैं मोलिक्यूल। ओके, तो तो चौक का जो सबसे छोटा जो वो होता है, पार्ट होता है, वो है molecule. Similarly, you can take any matter. So if you divide, divide, finally you will end with molecule. Okay, so then again, if you divide further the molecule, so basically again if you divide it, or if you, break the molecule, so you will end up with the atom or atoms. ओके, तो इसमें हम क्या समझेंगे, तो जो होता है, जो if you understand this, so atoms are building block of your matter. ओके, तो हम जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए ब्रिक्स का जरूरत है। ठीक है, तो एक एक छोटा छोटा ब्रिक्स डाल के हम घर बना सकते हैं। तो ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑफ योर होम। तो जो घर का होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, ब्रिक्स होता है। ऐसा ही कोई भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो क्या होता है, एटम्स होता है। ठीक है, तो जो अभी क्या होता है, जो एटम से बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनता है योर मैटर। सो एनी मैटर सो दैट आर मेड of molecule. Okay, again molecule are made of atom. So this is the simplest form to understand between the atoms and molecules and matter. ओके, तो सीधा तरीका से ये बता सकते हैं, जो एटम्स क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। ओके, एंड नो दैट इज invisible, that we cannot see, and its size in the range of nanometer, okay, which is very small, and
that we can see. So before going to this, we have to learn, before coming to this, the concept of this atoms molecule. We'll have to learn few things about the law of combination. So those are very important law. So in the most competitive exam, you can expect the questions from all these law. So basically law of chemical combination. हम chemical combination का मतलब क्या होता है? हम जो मैटर की बात करते हैं, ठीक है, जो मैटर्स है, तो वो मैटर्स कैसे बनता है, वो जो हमने अभी सीखा है, तो जो एटम से बनता है मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल, एंड देन मॉलिक्यूल टू मैटर। ओके, तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये कैसे हो सकता है? Actually, this is the first law is the law of conservation. तो इसमें क्या बताते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बोलते हैं? जो मास नेवर और इट नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो बेसिकली इफ यू टेक एनी मैटर, सो वो हम उसको क्रिएट भी कर नहीं सकता और तोड़ भी नहीं सकता। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल के तरह में हम देखेंगे। सो बेसिकली इफ यू टेक द कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हम कैसे जानते हैं? ये चुना पत्थर, ओके, और लाइमस्टोन, तो इसको हिट करेंगे तो क्या क्या होगा? ये सबको पता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है, इसको हिट करने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसको ऐसा एक्सपेरिमेंट की तरह से हम ऐसा लेंगे, 100 ग्राम लेंगे, तो इसमें क्या है? इफ एक्चुअली if we calculate the molecular weight, so later we'll learn how to calculate the molecular weight. So basically if we take 100 grams of calcium carbonate, so then out of this, so basically this you will have 56 gram of calcium oxide and 44 gram of your carbon dioxide. Now, if you combine this before the reaction, before starting reaction, you are having 100 grams of calcium carbonate, and after reaction, you are having two different matter or the molecule or compound. So basically, this is a calcium oxide and carbon dioxide. Even though आपके पास दो from one substance you got two substance, even though their total mass is remain constant. ओके, सो ये हम समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ऐसा। इफ यू टेक लाइक इफ यू वांट टू द परफॉर्म बेसिकली इन दिस रिएक्शन, क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हीट करने से हम खुला जो होता है, जो ओपन वेसल में हम ऐसे करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए। लेकिन हम एक ऐसा ही सीधे तरीके से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली। व्हाट यू हैव टू टेक ए एच शेप टेस्ट ट्यूब। एच शेप टेस्ट ट्यूब हम ऐसे लेंगे, ओके, तो इसमें क्या डालेंगे? तो एच शेप जो टेस्ट ट्यूब है, और एक साइड में हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, दिस इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट। और अदर साइड में हम क्या डालेंगे? और डालेंगे NaCl। ओके, तो उसमें दो जो एज शेप है, उसका जो दो साइड है, तो दोनों साइड के एक में हम ले रहा है सिल्वर नाइट्रेट और अदर में सोडियम क्लोराइड। नाउ we tight it, we cap it, then we can take a weight. Okay, so you take weight. Okay, so you will have a gram, some x gram, okay, x gram before doing reaction. Then what you do, you just mix these two solution. Then what will happen? So this will go to this way and this will go to this way. So basically you will have a mixing of this solution. So basically अभी क्या है? दोनों एक साथ मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तब इसके साथ रिएक्शन होगा। इसमें रिएक्शन क्या होगा? So basically in this reaction what we will have? AgNO3 and NaCl. So basically in the reaction we will get AgCl plus NaNO3. तो हम कैसे ये समझेंगे जो इसमें रिएक्शन हुआ है? एक्चुअली दोस both the reaction, this will be clear solution. Silver nitrate, ये भी clear solution, ये भी NaCl, it will be a clear solution. Now if you mix this one, you will see a white precipitation of this is silver chloride.
तो हम इसमें जब सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तो उस वो देख के हम पता चलेगा जो इसमें रिएक्शन हुआ है, और सॉरी, रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन के बाद हम क्या करेंगे, जो इसका वेट लेंगे, ठीक है, सॉरी, रिएक्शन के बाद इसके वेट लेंगे, तो ये वेट लेने के बाद हम देखेंगे उसका वेट y ग्राम, एंड दिस x and y, it will be the same. So basically before and after reaction, so the weight will be same, and this is the law of conservation of mass. Okay, जो मैटर जो है उसमें हम उसको क्रिएट भी कर नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, जस्ट इट विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. Okay, so this is your the law of conservation of mass. Okay, so and it was proposed by the Lavoisier. Okay, this is very important. Okay, so now in our the second law, we are having fourth law, and in the second law, this is called the law of constant proportion and composition, or definite proportion. तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम कोई भी जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो बनता है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, जो their weight proportion are same. So for example, if we take an example of the carbon dioxide, okay, CO2. Okay, so इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, डिफरेंट, सो इसमें है कार्बन है, ऑक्सीजन है. ओके, सो इसमें क्या है, कार्बन का जो वेट है वो एक्चुअली एटॉमिक मास है वो 12. ओके, और उसमें जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो 32 है. तो इसमें जो प्रोपोर्शन है, जो 12:32, so this is the composition. So carbon dioxide means, so this is your carbon dioxide, carbon dioxide. This means, so this is you're having one carbon and two oxygen atom, and the weight is the like a, this is the ratio 12:32. Okay, तो हम ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीका से हम बना सकते हैं, जैसे है कार्बन जला के, so actually if we burn the carbon, so we will get carbon dioxide. Okay, so this is the first process, and then if we heat the sodium bicarbonate, so basically this is your sodium bicarbonate, or this is also, this is a baking soda, for baking, bakery, so they use frequently in the for the baking of bread. Okay, so if you heat it, so then what will happen, you will have a sodium carbonate and carbon dioxide and water. So this is another person. And if you remember, so in the first reaction we started with the calcium carbonate or chunna patthar. So basically if you heat it, that will also give you carbon dioxide. So now you see, we just now we learn, so there are at least three ways we learn, in three different method, कार्बन डाइऑक्साइड हम मिल सकते हैं, और हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो इन ऑल केसेस व्हाट विल हैपन, सो द composition of carbon dioxide, in the composition of carbon dioxide, your carbon and oxygen, that will remain constant. So whatever the way you prepare carbon dioxide, always there will be one carbon and two oxygen atom, and the mass ratio will be 12:32. So this is what the law of constant proportion, or the definite proportion, or the composition. Okay, so this is what we can understand now. So any compound what you can make in a various different ways, so always they will have a the the constant composition, as well as the ratio of mass will be the same. Okay, so in the third law will have the law of multiple proportion. तो इसमें क्या है, इसमें ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, multiple proportion. So if we take any element, so basically any if there is any two elements, so basically if you take A and B, okay, so if you take A and B,
And out of that, so if you have a different composition like a x, y, so if you have a something like that, so then what will happen, in the x, so this composition, so basically the with respect to one another, so things always will be constant. So let's take an example like this. So yeah, again we will consider carbon and oxygen. Okay, so if we take carbon and oxygen, so basically carbon, if we burn carbon with sufficient oxygen or excess of oxygen, it will produce carbon dioxide. If we have a relatively or less sufficient, मतलब इसमें जितना जरूरत है तो उससे कम हमको ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा, carbon monoxide. So this is very poisonous, as you know. Now if you compare these two, so here क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला के हम मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड। तो इसमें क्या है, जो मास का हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, 12:32 एंड हियर 12:16। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 12 पार्ट कार्बन के साथ जो 32 पार्ट ऑक्सीजन मिला के हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज 12 पार्ट विथ 16 पार्ट। नाउ इफ यू कंपेयर हियर, द कार्बन इज कांस्टेंट or oxygen is changing. Now if you take a ratio of this carbon and oxygen in carbon dioxide, so basically that will the oxygen in carbon dioxide is to oxygen in carbon monoxide. So the mass ratio will be 32 is to 16. So that is 2 is to 1. Okay, so this is what the law of multiple proportion. So this will be a simple relationship. So again we can take another example to understand this. So if we take an example like this, so hydrogen and oxygen, so hydrogen and oxygen मिला के क्या होता है, this is a common reaction, so we will have H2O. Okay, so again हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के ये भी होता है जो हाइड्रोजन peroxide. So in corona time, so we learned this is also a disinfectant, और सब कुछ साफ करने के लिए ये हाइड्रोजन peroxide का सॉल्यूशन भी इस्तेमाल होता है. So this is also decolorizing agent or the bleaching agent. So this is used infrequently. So here if we see, this is the mass. So basically the mass here, the ratio is 2 is to 16. Okay, and for in this is your hydrogen is to oxygen, so this is your 2 is to 16, and for hydrogen peroxide, so this is your 2 is to 32. Okay, so now if you compare this, so again, so this is again hydrogen and oxygen ratio, so that will be, so two parts of hydrogen react combines with 16 part of your oxygen. Here two parts of hydrogen combines with 32 parts of oxygen. So now if you compare with this oxygen into sample, so basically hydrogen peroxide, so this is like a 16 is to 32, so here 1 is to 2. So this is a simple relation, and this is the law of multiple proportion. Okay, and you can try this one by calculating this. So by knowing the mass of, so basically we can take an example like this, N2O, NO, N2O3, N2O2, N2O5. So here we learn the atomic weight of oxygen is 16, and here this is atomic weight of oxygen is nitrogen is 14. So now you can calculate and you can find out whether there is a simple relation or not. So here, because here the common two elements is common, nitrogen and oxygen, so they are making a different compound. Now whether they are following this multiple proportion constant or not. So this is very very important. So the second one, the law of constant proportion and this law of multiple proportion, these are very very important for your competitive exam. So for this they will just test you, give you the compound. So like a for example, you are having lead, and lead upon hitting the lead with a sufficient of oxygen, so you are having uh, two compounds A and B, and two compounds A and B. So what is the relation between A and B, or which log
which chemical combinations law this follows. Okay, so there, by doing this, so you can understand. So basically, from the two element you are getting more than one, so that will be your law of the multiple proportion. And the fourth law is the law of reciprocal proportion. So this is like a big many things are there. So basically we'll take an example like this. So basically if if we are taking an example like A and B, so it reacts and it gives X. ठीक है, ए और बी दोनों मिला के रिएक्शन करके क्या होता है, एक्स होता है. और अगेन ए रिएक्ट्स विथ सी अनदर कंपोनेंट एंड वी गॉट वाई. तो इसमें क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है. और उसके साथ साथ इफ बी और सी रिएक्ट्स, सो बेसिकली बी एंड सी रिएक्ट, तो उसमें क्या है, इफ इट प्रोड्यूस अनदर कंपाउंड जेड, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन. तो इसमें क्या होता है, जो बी बी और सी, if they form a compound, so they will bear a simple reciprocal with respect to what they the way they call the no sorry the way ये A के साथ ये combined हुआ था. Okay, so for example we can take the carbon. So carbon it reacts with hydrogen. Carbon it reacts with the hydrogen. It form the methane. Okay. Or again carbon it can react with oxygen. तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो again we know हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या होता है, वो वाटर होता है. ठीक है. So this is water, and here if we compare like this, so this is 12 parts carbon, इसके साथ क्या है 4 parts of हाइड्रोजन, ये कंबाइन होता है. और उसके साथ ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये 12 पार्ट्स, तो 12 पार्ट्स कार्बन, एंड वी आर हैविंग 32 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें क्या होता है, जो हम ये देखेंगे, सो एक्चुअली सो 12 पार्ट जो कार्बन के साथ 4 पार्ट्स हाइड्रोजन हम जुड़ के बनते हैं मीथेन. और हियर हियर 12 पार्ट कार्बन एंड 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन मिला के होता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो वाटर में क्या होता है, दिस इज योर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट विल combined with no 16 part of the oxygen. So basically it says, so if like this, so B, if they can B and C, so they will combine either with the same proportion as it combined with A, or in a simple relation or the simple ratio of their mass. So here you will say this will be 1:8. So this is a simple relation, or with a simple ratio, with the simple ratio they combine. Okay, so these are the four laws, and these, at least the last three laws are very important for your competitive exam. Okay, so now sorry, नाउ हम क्या करेंगे, जो जो अभी एटम के बारे में हम पढ़ेंगे. तो दिस इज योर डाल्टन्स atomic theory. Actually if you we are in the modern science, we consider, so Dalton is the person, so actually तो उन्होंने ये एटम के बारे में बताया था. Even though, but nowadays when we look back in the history, so actually Marsi Kunad in India, from India, in the Vedic period, so he also gave the idea of the atom. So we are not going to the details. So basically here our topic is Dalton's atomic theory, so we confine with this. So हम यही पढ़ेंगे. Actually what is his proposal, उन्होंने क्या बताया था एटम के बारे में, ये जो है, जो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजिबल एटम्स. सो इसका मतलब है जो एटम्स है, एटम को हम तोड़ नहीं सकते. ओके, सो हम एटम को डिवाइड कर नहीं सकते. सो दिस इज हिज postulates. Actually this was in early
19th century, so it is like a 1008. So basically there would not have this much microscope to see all these things, but without seeing, so again we learn, हमने पहले ही बताया था जो एटम का जो साइज है ये बहुत ही स्मॉल है इन द नैनोमीटर स्केल, सो बेसिकली इन द 10 to the power minus 9 meter in this scale. So this is visible. So without seeing all these things, so he proposed like this. So matter consists of indivisible, atoms. So atom is the smallest part of the the matter. Okay, और उसको हम तोड़ नहीं सकते. Okay, again, the all the atoms of a given element तो have identical properties such as mass, shape and size. तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो बताते हैं, जो हम चौक के जो लेते हैं चौक, ऐसे ही तोड़ तोड़ के जो उसका जो एटम मिलता है, तो वो उसमें जो है वो उसमें जितना सारे चौक किधर से भी लेके आओ, तो उसको तोड़ के जो फाइनली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा एटम मिलेगा, तो उसका सभी का चक का जो मास शेप साइज वो एक ही होगा. ठीक है, तो हम किधर से भी चौक लेके आए, तो उसका सभी का जो चौक जो उसका जो एटम्स मिलेगा उस पे उसका सभी जो प्रॉपर्टीज एक ही होगा. लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स, द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द मास साइज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. इसमें क्या है, जो हम चौक के साथ जो आयरन लेंगे तो क्या है, तो उसके साथ जो चौक के जो एटम है वो आयरन के साथ वो तोड़ के जो एटम मिलेगा, दे आर नो वेरी डिफरेंट इन देयर मास, साइज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो compounds are formed when the atoms of different elements combine in a fixed and simple ratio. Okay, see whole number ratio. तो उसमें क्या होता है, जो same number, so atoms like any atoms. Now we learn, so basically atoms of hydrogen and atoms, if atoms of two hydrogen atoms they combine, so they will form H2 molecule. If the atoms of hydrogen and oxygen combine, so they will form the water molecule. So this is what he meant to say. So basically हम कोई भी compound जब form होता है, तो atoms of different element or the same element, so basically the way they combine, actually it is a simple and whole number. Okay, so here you see one, so basically two. For this case, no, you have a two hydrogen, one oxygen, तो इसमें water बनता है. तो this ratio is 2:1. This is very simple ratio, and these numbers are whole number, not fraction number. Okay, so this is another point. Okay, and this is an atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. तो कोई भी मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल के एक्चुअली मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वही वही एटम्स दो वो रिएक्शन पे टेक पार्ट करते हैं. मॉलिक्यूल का जो जो एटम से बनता है वही एटम ही टेक पार्ट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी important. And atoms of two elements may combine to form in a different ratio to form more than one compound. So that we learn in a law of law of different proportion or multiple proportion. So that theory we learn, and basically this is the same statement. Okay, so it says. So now and what else उन्होंने बताया, जो atoms are neither created nor destroyed. So basically no that is no हम atom को तोड़ नहीं सकता, and this is like indivisible. So this is in the past also we learn about this. So these are the points. So these are the points. So these are no very important points. क्या है important point क्यों है, क्योंकि ये जो point है competitive exam में ये statement दे के वो पूछता है क्या है, ये कौन सा statement डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं है. और डाल्टन ने जो जो एटॉमिक थ्योरी का जो प्रपोज किया था, which is not correct or which is true about this statement. So basically you will have आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट रहेगा, तो उसमें से आपको चुनना होगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. सो दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and this is now
even though he successfully explained all this theory, but his theory has a lot of limitation. So now present understanding about the molecules, about the atom. So we are having different perspective, which is says that oh, which is not matching with the Dalton's atomic theory. ठीक है, तो उसमें पहले क्या है, सो इट नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास, बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द गैस वॉल्यूम। तो उसमें क्या होता है, जो गैस में हम बोलते हैं जो हर जो गैस मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक वन मोल, इफ यू टेक वन मोल, so that will give you the same, all gas will have the same volume at STP, standard temperature and pressure, that will give you 22.4 liter. So that is that gas volumes law, it cannot explain. Okay, and this is, it could not explain why atoms of different element have different size and valences. So later we learn, so basically atoms will have different size, different atom will have different size and their mass, why they have, so that he could not explain. Okay, and then the why do atoms of the same or different elements combine at all to form the molecule? तो एटम क्यों जुड़ के मॉलिक्यूल बनाता है, उसका भी वो उसके पास कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड molecules which account the existence of matter। so basically now उसमें क्या है, क्यों है जो मैटर हम बनते हैं अभी, अब हम लोग को पता है जो मैटर्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म। तो ये जो मैटर क्यों थ्री डिफरेंट फेज में रहता है, सॉलिड फेज में रहता है, क्यों लिक्विड फेज में रहता है, उसके लिए क्या बाइंडिंग फोर्स है, तो वो कुछ उसके बारे में कुछ बताते नहीं है। ठीक है, तो और भी ये बताते हैं, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। तो उसमें जो सबसे क्या है, जो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल, सो मतलब जो सबसे जो लास्ट जो पार्टिकल है और ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। सो कंपाउंड में जो पार्टिकल और जो कंपाउंड में जो दोनों का जो डिफरेंस है, वो उसके बारे में कुछ बताते नहीं है। ठीक है, एंड the next sorry the next is, so all this limitation again we learn about, these are the limitation it could not answer, and again the present understanding of the in the science, so again we'll see, we'll see the atoms are divisible. So atom consists of electron, proton and neutron. So again we'll discuss about details of that in the next class. So for today, thank you for your kind attention.